गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी ने पीएलए को किस तरीके से वापस धकेल दिया सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, और ये हुआ था 1967 में और 1987 में। अमूमन हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और सब सोचते हैं क्या ये पीएलए एक महारती देश है या आर्मी है ही नहीं। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल संजय कुलकर्णी। जनरल कुलकर्णी, वेलकम टू द शो। गुड इवनिंग एंड हाउ आर यू? So firstly, thank you very much. Grateful and so nice to be always with you. And sorry I got delayed because of certain No, activities. not at all. Don't worry. Yeah, Right. Wonderful. Yeah. And मैं सबको बताना चाहता हूँ, जनरल कुलकर्णी has served in this area, both in Sikkim and in Arunachal, and he was present when the SUMDORONG incident was happening. He was posted there. So as far as SUMDORONG is concerned, you are getting first-hand information about that entire place, right? And as far as Sikkim and Natula are concerned, you are getting on-ground information because General Kulkarni and I both have served there. We know the area, but since it happened long before, but we generally have relate to the area and will tell कि कहाँ क्या हुआ है, ताकि आपको क्लैरिटी है कि ये क्या हुआ है और किस तरीके से हुआ है, राइट? आपको सबसे पहले मैं थोड़ा वाकिफ करना चाहता हूँ इस मैप के साथ, इस मैप के साथ। यहाँ देखिए, ये मैप है पूरा इंडिया का, जहाँ भूटान बीच में है। बाएं साइड है सिक्किम, जहाँ नातुला है। दाहिने साइड है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ अरुणाचल प्रदेश लिखा है। बाएं कोने में ऊपर है तवांग और उसके ऊपर बुमला और ये इलाका है। और हम आज के दिन सबसे पहले हम देखेंगे नातुला में 1967 में क्या हुआ और सिक्किम के इलाके में जाएंगे और बात करेंगे। सो General Kulkarni, all yours, just take it on. Thank you very much, sir. At the very outset, we must first understand कि 62 की लड़ाई के बाद और अचानक ये 67 में ऐसे क्या हो गया कि चीन को ये सब करना पड़ा. So it's very important that we just go briefly into the background. Yeah, you must. Yeah. So firstly, after the 1962 जिसमें हमारी हार हुई, उसके बाद जब 65 की लड़ाई शुरू हुई पाकिस्तान के साथ, उस दौरान at that point of time China made a firm demand that Nathula and even areas of Chola, Jelepla should be handed over to them. When this demand came in the midst of a war with Pakistan, not that suddenly the demand came, that kind of tension prevailed along the Sikkim border right from 1963, 64, and China now took advantage of the war of India with Pakistan. What is it that was sort of, China was feeling insecure about? The whole thing was the Chumbi Valley. Now, Chumbi Valley is a valley which runs north-south with onto the west is India. Those days Sikkim, of course even now, but now the state of Sikkim. Earlier a Sikkim which was a protectorate, which was to the west of the Chumbi Valley, and to the east of Chumbi Valley is Bhutan. And this 100-kilometer long, like a dagger wedge which comes through, approximately about between 25 kilometers wide and 100 kilometers. That is the way the Chumbi Valley is. And that is why Nathula was one pass which the Chinese were very keen, and so was Jelepla. इन दोनों passes के लिए चीन का पूरा मुद्दा था, और चीन को इस बात का ये लग रहा था कि सिक्किम जो है वो हिंदुस्तान का प्रोटेक्टरेट क्यों है और क्यों नहीं वो हिंदुस्तान से अलग हो जाता. So
that was the thinking of the Chinese at that point of time. As we know that Sikkim merged with India later in 1975, and finally by about 2005, China recognized that Sikkim is part of India. That is the new thing. But going back to 67, अब इनमें जो which are those personalities that are there, that's very important to see. We have General Sagat Singh, who is the divisional commander there. We have General Arora, who at that point of time, who is none other than the corps commander there. And we have Field Marshal Manekshaw, who is the army commander. तो ये पर्सनालिटीज हैं 1967 में. और जब चीन ने ये मांग की कि हमें नथुला और जेलपला दिया जाए, तो जनरल सगत सिंह, who was the divisional commander, he put a firm foot. He said, no, there is no question of the Jelepla, or for that matter Nathula, of which he was responsible for. Jelepla, another GOC was responsible. तो जेलेप्ला जो है वो चीन को दे दिया गया और आज भी चीन के कब्जे में है. लेकिन नथुला के लिए जनरल सगत सिंह अड़ गए. उन्होंने बोला कि मैं किसी भी हालत में ये नहीं दूंगा. Let us see what happens when it comes to this. Now, at this kind of a situation that has cropped up, so General Sagat Singh's stand that Nathula will not be given for a very simple reason. Nathula से हम लोग जो चुम्बी वैली है उसके अंदर we could see, and that people which that was there, it was only from Nathula. अब नथुला के दो भाग है. The north जो नथुला है वो चीन के पास है और साउथ नथुला जो है वो हमारे पास है. नॉर्थ नथुला से जो क्या कह सकते हैं, the view or the observation that is there from north is very little. It is from the southern part, the occupation of Nathula that we have, वहां से जो अपना observation है into the Chumbi Valley is much better. The part of Nathula जो हमारे पास है उसमें भी दो भाग है, एक सेबुला और दूसरा है कैमल्स बैक. तो ये दो भाग हमारे पास. लेकिन चीन लगातार all along with insisting that आप ये नथुला से हमें दे दो और जेलपला भी दे दो. Now we confine ourselves to only Nathula. जब भी बातचीत होती थी, the Chinese would get upset and would वो pushing, shoving with the Indian troops on Nathula would happen. और दूरी जो थी वो बिल्कुल वर्चुअली से 1-2 मीटर की गज की दूरी पर रोज इस तरह की बातचीत, इस तरह का झगड़ा होता रहता था. और ये जो झगड़ा है एक वक्त ऐसे नौबत में आ गई कि मुश्किल होने लगा. चीनियों ने क्या किया, अराउंड the 5th of August of 1967, they did the same thing. They did subsequently again. They came on the 12th of September. They did the same thing. Not the 12th of September, the 27th of August. Again they did the same thing. 5th of September, again the same thing. रोज आना, करने नहीं देना. Subsequently, they would come with loudspeakers on and make an announcement that go back. There's that propaganda war that would continue with it. Ultimately, what had happened was that on the 11th of September and a little before that, on the 6th of September, there was a political commissar who used to keep coming, who alone could understand a bit of English and speak. So in the pushing and shoving, he also fell down and he then went back and didn't say anything. Of course, they threatened that we'll come back and do whatever we want to, and they went back. On the 11th of September, Colonel Rai Singh, who was the CO, the commanding officer of 2 grenadiers, he decided that invariably there is a lot of tutu mama which is happening. Let's have a wire fence which will clearly demarcate what belongs to us and what belongs to the Chinese. Now the Chinese didn't like this aspect, what you're seeing on the screen, that fencing to be done. But on the 11th of September, Colonel Rai Singh, along with his commando platoon, came there and he said, this. Accordingly, that political commissar of the Chinese again came, again threatened that just remove it. They said no. Again, pushing and shoving happened, and he fell down. In that falling, he even broke his spectacles, and then again these Chinese went back. When the Chinese went back, a little later, they heard the whistles, and when the whistles were heard, there was a firing that happened from the north of Nathula, which the Chinese were occupying
with MMG and all our people. There was a company of engineers, the 70 engineer company which was laying the minefield. This 18 Rajput company under Harbhajan Singh, which was giving the protection. And here it was Colonel Rai Singh was standing with his commando platoon. So they all came under heavy fire. And since there were no shelter, no way that they could take cover, there were tremendous amount of casualties, in which Colonel Rai Singh was also injured, and that is where the whole thing started off with this kind of a firing. Now, this was on the 11th of September. The Chinese opened up with artillery also, but the artillery was not effective. And here it's very interesting. Subsequently, the commander who went over there, then later who retired as General Sheru Thaplial, he was the OP officer at Sebula. Now, from Sebula, you could have a very clear view, and therefore he also then ordered shelling. And there was shelling from the Indian side, there was shelling from the Chinese side, which was not effective, but the shelling from the Indian side was very effective. 1 minute, Sanjay, 1 minute. आप इस picture में you see the left picture. Yeah. The area behind is all clearly visible right from a long distance. That's what General Kulkarni was saying. You know, from our side of Natula, you can see from long, and when you see from far distance, you can bring down fire. That's the whole thing when General Sheru Thaplial did all this. Absolutely. Yeah, please go. Now you see the fencing, जैसे दिखा रहे अभी. After all this that has happened, you find that between the 11th of September 1967 and continuous fighting, 3 days, non-stop, day and night, there were heavy casualties on both sides. Around the 15th of September, the Chinese again started threatening, we'll use air, this, that. Indians knew that they could do nothing about it. Then the talk of ceasefire came up, resulting in, on the 15th, there was a ceasefire. There was no firing whatsoever. And as luck would have it, the army commander himself, along with the corps commander and the divisional commander, went there for handing over and taking over the bodies, because there are a whole lot of casualties that had occurred over there. Much that Chinese would have said that we lost only 38 and the Indians lost about 68. It was just not. The Chinese lost over 300 PLA soldiers dead, and there were 400 plus injured. The Indians lost about 80 of them. Now, this is as regards the Natula is concerned. Now, just when this thing was going on between the 11th of September and the 15th of September, suddenly, after about 2 weeks, the Chinese again opened up, and this time it was for Chola. Now, from Chola, which was there, you found that Chola, which is a little north of Natula, was the Chinese were under bunkers. Now, this particular attack came on the 1st of October 1967, lasted, the duel was only for 1 day, but it resulted in massive casualties of the Chinese because of the accurate artillery fire, which again, the credit goes to the guns that were firing from Shalating and the OP officers that were bringing in the absolute accurate fire. Thereafter, it's very interesting that the Chinese from Chola pulled back 3 kilometers to a place called Kam, and they're still there. अभी भी वहीं पर हैं जहां पे वो 1967 में गए पीछे, आज भी वहीं हैं. नथुला में भी वहीं पर वही फेंस है, उसी के आसपास है. अभी आप देख रहे हैं कि काफी कुछ स्ट्रक्चर्स उधर बन गए हैं और वहां पे टूरिज्म हो रहा है, लोग जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है. और इस पूरी लड़ाई में ये जैसे दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं, आप चाइनीज का फ्लैग देख सकते हैं कितने नजदीक की दूरी पर है. हार्डली मुझे लगता है 3 या 4 गज, maximum not being more than 5 meters is this area between the Chinese. और उसके बाद जिस तरीके से ये टूरिज्म है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, तो ये 2006 में ट्रेड के लिए खुला. और ट्रेड होने के बाद ये जो ट्रेडिंग पॉइंट होता था, बीपीएम्स होते थे, तो यहाँ पर अब ऑफ कोर्स जिस तरीके से गलवान में हुआ, उसके बाद अब तकरीबन सब ठप है, वहां पर कोई ट्रेड नहीं होता है, कोई कुछ नहीं हो रहा है. लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद फायदा क्या हुआ. फायदा ये हुआ कि 1967 video 1 minute. Can we show the video for 1 minute? Yeah, please sir. ये वीडियो देखिए. अभी ये नतुला का वीडियो है, आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का इलाका है ये. राइट,
अब देखिए दिया गया, दिस इज द थिंग, वो जो लास्ट पहाड़ी है वहां से हमारा ओपी ऑफिसर ने फायर गिराया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये लास्ट इलाका या है जहाँ, क्वाइट राइट. हाँ, नाउ यू सी, या नाउ दिस, ये जो वक्त है ये जून है, ये फोटोग्राफ्स लिए जून के महीने में इसी साल. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बर्फ वहां गिरती है और क्या माहौल है, और किस हाइट के 14,000 से ऊपर की इसकी ऊंचाई है. वहां पे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं. अब इस 1967 की लड़ाई के बाद, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बातचीत नहीं करते हैं, द ओनली थिंग दैट द चाइनीज रियलाइज दैट इंडिया वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड द प्रिपरेशन वाज सो गुड दैट दे स्टार्टेड थिंकिंग कि 1962 वाली फौज जिसको हमने हराया, और 1967 में आज हमको हार देखनी पड़ रही है. चोला में वो 300 किलोमीटर से ज्यादा वो पीछे गए. नथुला में सगत सिंह जो वहां पे डिविजनल कमांडर थे, उन्होंने बात नहीं मानी, चीनियों को पूरा जैसे बोलते हैं धूल चटा दी, वो वाला हिसाब करके रखा. और तब से लेकर के 1967 और 1967 का माहौल देखिएगा आप, उस वक्त क्या क्या हो रहा है पूरे विश्व में, तब पता चलता है कि उसी वक्त माओ से तुम जो है चीन के अंदर ही प्रेशर में थे. उनके बीच के लोगों के, उनको डर था कि ऐसे ना हो कि उनकी जो सत्ता है उसे हटाया जाए, तो उससे भी नजर हटाने के लिए वो सोचे थे कि जैसे 62 में उन्होंने किया उसी तरह भी 67 में करके वो कुछ करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं. और चीन ने लगातार 67 से लेकर के मैं कहूंगा 87 तक कुछ नहीं, कोई गोली फायर नहीं, एक्सेप्ट इन 1975 जहां पे जनरल शंकर खुद गए हुए हैं, और वो एरिया है तुलुंगला. जहाँ 1975 में तुलुंगला में 4 भारतीय जो सैनिक जो हैं वो मारे गए, और वो पेट्रोलिंग के लिए गए थे. वो चाहे चीन कुछ भी बोले, वो वहां पे जड़ी बूटियां हैं उसको लेने के लिए गए, जहाँ पे वो थोड़ा सा हो गया और फायरिंग हुआ, जिसमें वो कह रहे हैं गलती से हो गया, हमें नहीं मालूम था जैसे. लेकिन फ्रॉम 1967 टिल 1975 ये 4 लोग तुलुंगला में, टिल 1987 जिसके बारे में अब मैं बताऊंगा, और जिसके बारे में जिक्र करे थे जनरल शंकर जी, एरिया सुमदोरोंग चू, वहां पर भी सुमदोरोंग चू में भी 87 में एक भी गोली नहीं चली, कोई फायरिंग नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ. इसके बाद अगर कोई आदमी घायल हुए वो है गलवान में 15 जून 2020. तो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट अ लॉन्ग वे, किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने और भारत ने ऐसा जवाब दिया कि चीन हिल गया कि अब हम इनके साथ वो जो व्यवहार जो वो सोचते थे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो हम बोलेंगे वो करेगा, ये जो भारत है ये मानने वाला नहीं है. और यही मैं बाबा वो पर्सनैलिटीज की जो बात कर रहा हूँ, वही पर्सनैलिटीज. आर्मी कमांडर कौन थे? फील्ड मार्शल मानेकशॉ. क्या बने बाद में? वही जनरल जिन्होंने 1971 वॉर में विक्ट्री दिलाई. वो जनरल अरोरा कौन थे? वो जब वो वक्त कोर कमांडर थे 1971 वॉर में, वही आर्मी कमांडर थे. जनरल सगत जो डिविजनल कमांडर थे, वो क्या थे 70 वॉर में? वो कोर कमांडर. तो यही 3 की जो जोड़ी है, मिल करके उन्होंने 1971 में भी जबरदस्त एक जीत दिलाई भारत को, और एक अजीब सा ऐसा मैं कहूंगा माहौल पैदा हो गया चीन के अंदर कि ये देश जो है जिसको हम 62 की नजरिया से देखते थे, ये इतना कैसे चेंज हो गया, इसमें इतनी तब्दीली कैसे आ गई कि कैसे इस देश ने हमारे को टक्कर दी. सो फ्रॉम दैट ऑनवर्ड स्टार्ट 1975, जैसे जलशंकर बता रहे थे, अब तुलुंगला क्योंकि वो चले हैं, और तुलुंगला ही इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ से तवांग. जो तवांग के जो रीजन है, ये कहाँ हो रहा है? सिक्किम में हुआ. 1967 कहाँ हुआ? सिक्किम में हुआ. और सिक्किम में कब हुआ? जब Sikkim was a protectorate. It was not part of, it was not a state India. of India. It became a state of India in 75, and finally it merged in 75, and then in 2005, the Chinese accepted that this is there. उसके बावजूद भी वही एरिया, वही जगह हमने देखा 2017 में डोकलाम किया. और डोकलाम में भी जब चीन ने क्या मकसद ये कि जो प्लेटो है विच इज अबाउट 85 odd square kilometers, इट ओवरलुक्स द चुम्बी वैली. तो चुम्बी वैली जो है उसका, क्योंकि इट इज नॉट दैट इट इज सीन, बट अगर जो चुम्बी वैली से अगर कोई डोकलाम पकड़ लेगा, तो रोलिंग डाउन टू सिलीगुड़ी कॉरिडोर
है जो तकरीबन अगेन व्हेन वी से इट इज अबाउट 175 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट्स नैरोएस्ट इज अबाउट 22 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर, ये जो वल्नरेबिलिटी है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है। और इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ने के कारण जरूरी है कि चीन को किसी भी हालत में डोकलाम पे, अब डोकलाम जो है वो भूटान का भाग है, वो भारत का भाग नहीं, लेकिन भूटान को प्रोटेक्शन की जिम्मेवारी जो है वो भारत की है और दोनों देशों के बीच में संधि है। और चीन अब कोशिश कर रहा है कि किस तरह से भूटान को अपनी तरफ खींचा जाए, तो इसलिए वो उसके साथ टॉक्स पे लगा है कि हम आपको, अगर आप हमें डोकलाम दे देंगे तो बाकी जो दो ऑनक्लेव्स हैं वो हम आपको दे देंगे, तो जिससे कि इन अ वे वांटेड टू सेटल द बाउंड्री द बॉर्डर डिस्प्यूट विद भूटान। तो भूटान भी अभी तक भारत के साथ अच्छे संबंध, अच्छे दोस्ती होने के कारण डोकलाम के वक्त उन्होंने स्टैंड लिया कि जो भारत कर रहा है वो ठीक कर रहा है। और यही कारण है कि डोकलाम में भी चीन को एक जबरदस्त झटका लगा। इट हैड टू फाइनली पुल बैक। Whatever you might do in the Chumbi Valley, they can do what they want to do. But overlooking Chumbi Valley, occupying the heights के कारण चीन को हर हमेशा हम पे खतरा रहता है। Now coming down to Sundaram Chu. Kul, one minute. Let me. I would like to just mention a few points before we go to Sundaram Chu. देखिए ये जो उन्होंने बताया, ये जो नतुला का जो लड़ाई था, मैं तो लड़ाई बोलता हूँ उसको, ये छोटा क्लैश वैश नहीं, क्योंकि पूरी 5-6 दिन चला। ये बहुत निर्णायक था उन दिनों में। ये निर्णायक इसीलिए था कि 62 में हम हारे हुए थे इसी फौज के साथ, और 67 में इनको अच्छी तरीके से एक सबक सिखाया, जैसे जनरल कुलकर्णी ने बताया। और इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय विचार क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। राइट, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो है वो जून 2020 का, उन्होंने बोला चाइना लेटर क्लेम 36 of its soldiers were killed or wounded, while one Indian estimate approximated the number around 400. At least dozens were killed on both sides. ये तो इंटरनेशनल तो बोलेंगे। More Chinese fortifications were destroyed. However, because the Indian artillery was better located tactically on high ground of the pass, which, if Indian figures are correct, may explain why the Chinese came off worse. ये मानते हैं कि चाइना को मात मिला है उधर, right? So too would the logistical and leadership tumult inside a Chinese military already roiled by the political attacks of the cultural revolution. इसमें दो चीज मैं बताना चाहता हूं। एक, जैसे जनरल कुलकर्णी ने बताया, उन दिनों में चाइना के अंदर कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। 66 में माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था, तो उनका अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे थे विद इन चाइना, विद इन PLA। पर हमारी तरफ आप देखिए, जैसे इन्होंने बताया, बहुत रेजोल्यूट लीडरशिप था। जनरल मानेकशॉ ऊपर, उसके बाद जनरल अरोरा और GOC जो है, जो जनरल सगत सिंह, यही 3 लोगों ने बांग्लादेश के में भी विक्ट्री दिलाया हमें। ठीक है, जो लीडरशिप जो 62 में नहीं था, वो लीडरशिप अभी 62 में 67 में था, और इसीलिए ये हम जीत सके। उल्टा हो गया था, 62 में उनका लीडरशिप अच्छा था, हमारा लीडरशिप उतना अच्छा नहीं था। 67 में उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया तो वी हैव वन, एंड ये फॉरेन पॉलिसी बोलता है। ओके, कोलंबिया यूनिवर्सिटी का क्या बोल है? ओवर अ पीरियड, though these pivotal battles were forgotten, several decades later in 2020, as the two nations challenged each other in a bitter standoff in Ladakh, the battles of 67 between India and China served as a reminder that peace was earned the hard way in the region. Ironically, the losses of lives in a battlefield 50 years ago serve as a harbinger of a long period of peace that followed. ठीक है ना? 67 से लेकर तकरीबन 2020 तक बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्यों? मैं 75 में जो हुआ था तुलुंगला में, वो थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। वो एक छोटा किस्सा था, ऑफ किस्सा था। I mean, it was a one-off thing which both later said नहीं ये गलती से हो गया।
पर उसको अगर छोड़ोगे और डोकलाम जहां फाइटिंग नहीं हुआ या फायरिंग नहीं हुआ, अगर आप छोड़ोगे, अगला फाइटिंग जो गलवान में हुआ, और ये पहली बार था हमने वी एक्चुअली गिव अ ब्लडी नोज टू द चाइनीज। एंड ये चीज जो है हम भूल गए, इसीलिए हमने ये शुरू किया आज, राइट? अगर what we have won, where we have won well, we have forgotten. Or artillery did extremely well in 67. Artillery did extremely well in Kargil. दोनों हाई एल्टीट्यूड में काम किया है, हमें वो एक्सपीरियंस है। अगर वो एक्सपीरियंस अगर हम ईस्टर्न लद्दाख में अगला अप्लाई करेंगे, अगले लड़ाई में जब भी होगा, तो हम ईस्टर्न लद्दाख में नहीं कहीं भी, तो वी विल बी वेरी स्ट्रांग। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो नतुला है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप चोला, नतुला और जेलपला, ये तीन मेन पास है वहां, अगर आप देखेंगे तो चोला इज नॉट वेल कनेक्टेड बाय रोड, बट नतुला इज बेस्ट कनेक्टेड बाय रोड। नतुला इज आजकल जो ट्रेडिंग पॉइंट नियुक्त किया गया है, और ये जो जेलपला इज नॉट वेल कनेक्टेड ऑल्सो बाय रोड। आजकल तो है हो गया, पर उन दिनों की बात कर रहा हूं। तो नतुला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है जो हमने छोड़ा नहीं, ठीक है ना? तो वो इसीलिए हमने नहीं छोड़ा क्योंकि जनरल सागत सिंह ने बोल दिया कि नहीं छोड़ेंगे, राइट? सो अगर आप देखोगे तो वी 67 बैटल वाज अ विक्टोरियस बैटल। हमने एक सबक सिखाया पीएलए को। अफसोस की बात यह है कि ये सबक हम खुद भूल गए, और अभी गलवान के साथ हमें याद आ रहा है वो सबक, so that we can sort out Pakistan again. Sorry, Pakistan nahi, we can sort out China again. Right. Anything else more you want to add? Otherwise, we can go to Sumdorong Chu. Excellent. I think जैसे जनरल शंकर बता रहे थे, it could be better because जिन्होंने भी उधर सर्व किया है वो समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ जेलेपला, इम्पोर्टेंस ऑफ बटांगला, इम्पोर्टेंस ऑफ नतुला। नतुला बोलते हैं, वैसे वहां पे लिखते हैं नाटुला, NATULA, हम लोग बोलते हैं नथुला है, पर वहां पे वैसे नाम नाटुला। एंड ऊपर चोला, या वो दैट अनदर पॉइंट वाज देयर, योकला, योकला तो एक पॉइंट है। तो यू फाइंड ऑल दीज व्हिच आर देयर, बहुत जरूरी है। और चीन अब धीरे धीरे, जैसे जयशंकर बता रहे थे, भूटान को अपने इसमें चुंगन में लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि डोकलाम जो है, अब देख रहे हैं, जैसे फोटो देखा आपने कि किस तरीके से वो जो एरिया है उसको घेर के रखा हुआ है भारतीयों ने, और यकीन कर रहे हैं कि डोकलाम जो है किसी भी हालत में हम चीन को नहीं देंगे। और चीन को, क्योंकि ये आप देख सकते हैं शी जिनपिंग के वक्त ये हुआ डोकलाम, और 1967 माओ से तुंग के वक्त हुआ अपना नतुला, और 62 वॉर। तो जो उनकी जो सोच थी कि व्हाट दे कॉल, ये जो सोच माओ से तुंग की थी, वही सोच शी जिनपिंग की है कि और उस सोच को जो बार बार आती है शी जिनपिंग के दिमाग में, और उनको भी अब लगने लगा है कि भारत जो है वही टेम्पलेट जो 62 का है, और बार बार जो एक तरीके से धमकी देना या हम लोगों को बार बार याद दिलाना कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मैं अब आपको बताता हूँ सुमदोरोंग, वेरी इंटरेस्टिंग। One minute. I have one more point to put. ये देखिए डोकलाम, ये डोकलाम का जो लास्ट पॉइंट है, वहां एक जगह है गैमोचिन। उस गैमोचिन ओपी में मैं गया हूं, मैं बैठा हूं, ठीक है ना? तो ये जो गैमोचिन है, ये इस गैमोचिन के साथ ये पूरा चुंबी वैली आप देख सकते हो। जहां भी वहां पीएलए का फौज आती है आप देख सकते हो, ये डोकलाम को भी देख सकते हो, ठीक है ना? अगर वहां एक ओपी, जैसे मैं वहां था, मैं तो सेकंड लेफ्टिनेंट था, जो छोटा सा अफसर, पर था तो ओपी उधर। अगर मेरे गन्स थे, गन्स भी थे, हमारा कम्युनिकेशन सब कुछ थे, अगर कुछ होता तो मार देते हमको, आगे 1 इंच नहीं बढ़ने देते। अभी भी लोग सोचते हैं कि भाई वो डोकलाम आ गए, यहाँ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे और हमें डेंजर है। कोई डेंजर नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। वहां जो एक हमारा प्लटून है, उस गैमोचन के ऊपर, अभी तो और भी ज्यादा हो गया होगा,
और जो ओपी ऑफिसर है उसके साथ जो गन्स बैठे हैं उसके साथ हम पूरा इनको चित्तर बितर कर सकते हैं, ठीक है। आई वांट टू जस्ट सो दैट पीपल गेट रीइंफोर्स Yeah, द no, so आइडिया। excellent. And I'm so glad you brought this out because जो ट्राई जंक्शन है, जो हाँ, नाम बता रहे हैं जलशंकर गैपमोचिन, उसको हम लोग कहते हैं वो ट्राई जंक्शन है बिटवीन द थ्री कंट्री। थ्री लेकिन वो कंट्री, चाहता है बटांगला, वो नीचे ऐड करके, जिससे कि वो हमारे ऊपर एक तरीके से हावी होने की कोशिश करता है। या लेकिन डोकलम प्लाटो जो है वो भारत के ही कब्जे या में है और भूटान का है, इसमें कोई शक नहीं। डोकलम प्लाटो भूटान का भाग है, लेकिन उसके ऊपर अगर चीन कब्जा कर लेगा तो ऑब्वियसली उसको राइट, ऑब्जर्वेशन एंड अगेन आटे पाए पा, जैसे जनशंकर बता रहे थे, द रियल रोल प्लेड इन द बैटल और इन द वॉर ऑफ 1967 वाज आर्टिलरी। इट इज राइट, आर्टिलरी विच स्मैश्ड, जिसे बोलते हैं बंकरों का धज्जी बना दी, और 300 पीएलए सैनिक मारे गए, 400 घायल हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिलरी फायर। और इसमें 3 महावीर चक्र, 3 वीर चक्र दिए गए। तो इट इज एक्चुअली, आई गो अलोंग विथ यू शंकर सर, इट्स अ वॉर इन इट वाज विच अ वॉर इंडिया डिसाइसिवली वन। डिसाइसिवली शोड चाइनीज देयर प्लेस, कि आप हमसे इस तरह के पंगा और इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। देखिए एक I और think चीज that- मैं बताना चाहता हूं इसमें, अगर ये मैप देखिए चुंबी लिखा जहां है, वो उनका जो रोड है वो बीचों बीच वैली में आता है। अगर हम ये चोला के ऊपर आर्टिलरी बैठ जाए, आर्टिलरी के ओपीस बैठ गए, नतुला के ऊपर बैठ गए, अगर आप सबसे नीचे अगर देखोगे तो वो बटांगला है जो जनरल कुलकर्णी बोल रहे थे, ठीक है। ये अगर सॉरी या अगर आप देखिए नतुला से लेकर और लास्ट नोक तक अगर ओपीस बिठा दोगे तो आप पूरा ये जो रोड है उनका, जो वहां पार करके आना है हमारे इलाके के अंदर, इस रोड के ऊपर, राइट, ये आप उनको ना कहीं हिलने नहीं दोगे। ये हमारा सोच है, बेवकूफी की सोच है हमारे जर्नलिस्ट का या मीडिया वालों का, कि ये जो पीएलए वाले वहां से आ जाएंगे और हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आ जाएंगे वगैरह वगैरह। अगर पीएलए ने इस इलाके से कोई मूवमेंट किया तो उनका सलामी स्लाइसिंग वहीं हो जाएगा। सलामी स्लाइसिंग यहाँ आने की जरूरत नहीं, वहीं हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ आज के दिन, राइट। अभी कभी हुआ तो याद रखिए। ओके, नाउ आई थिंक वी शुड गो टू सुंदरंग चू। we can go to, just as a matter of since you have covered so well the entire area, चुम्बी वैली हर हमेशा सिक्किम का भाग होता था, लेकिन बाद में वो चीन का भाग हो गया। और मैं कहूँगा कि 1904 जब यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन हुआ, ये इसी चुम्बी वैली के द्वारा, यातुंग के द्वारा लासा को ले गए। उस वक्त चीन 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 ने अपना ब्रिटिशर्स ने चीन को बोला था कि उन्हें 25 लाख देने होंगे, तब हम आपको चुम्बी घाटी जो है तिब्बत को वापस करेंगे। तो तिब्बत का भाग होने के ये चुम्बी वैली जो है तिब्बत का भाग था, लेकिन चीन ने ब्रिटिशर्स को 25 लाख रुपए दिए, जिससे वापस दोबारा उनको चुम्बी वैली 1904 यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन में चीन ने ब्रिटिशर्स ने लिया, और उसके बाद 3 साल के बाद उन्होंने जो अदा किए 25 लाख, फिर उन्होंने चुम्बी वैली जो है उनको वापस दे दिया। यहीं से पंडित नेहरू भी गए थे जब उनको भूटान जाना था। यातुंग हमारा एक बटालियन होती थी उस वक्त, तो ऑफकोर्स 1954 पंचशील के बाद वो विड्रॉ हो गई, और एक ट्रेनिंग पॉइंट होता था, और यही रास्ता होता था जब हम लोग यहाँ से लासा जाते। हैविंग सेड दैट, वी कम डाउन टू सुंदरोंग। सुंदरंग चू, ओके, सुंदर, 1 मिनट, I'll just explain the map। मैप को एक्सप्लेन कर देता हूँ, या राइट। यहाँ देखिए, सुंदरोंग, 1 मिनट, बिफोर I'll give them a overall या explanation। हाँ, तो ये देखिए, ये तवांग का मैप है, जहाँ तवांग लिखा है तवांग है, बाएं भूटान है। अगर आप ऊपर देखिए तो 3 जगह है, केंजमाने, बुमला और तुलुंगला। ये 3 जगह में जो लाइन जा रहा है वो है एलएसी, ठीक। और एलएसी के ये ऊपर है तिब्बत। बुमला के जितना नीचे, बुमला, केंजमाने, तुलुंगला, वो पूरा इलाका हमारा है, ऊपर उनका है। मैं आपको जस्ट टू टेल यू, जनरल कुलकर्णी कमांडेड हिज ब्रिगेड देयर। ये इनका एक चप्पा चप्पा जानते हैं। और मैं एक बैटरी कमांडर था यहाँ,
और मैं यहाँ पूरा इलाके में घूम चुका हूँ, यहाँ तक मैं तुलंगला भी गया हूँ। मैं जब तुलंगला गया था, मैं जस्ट फॉर एज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, मेरे को उन दिनों में तकरीबन 18-19 दिन लगे, क्योंकि सब कुछ पीठ पे ले जाना पड़ता था, और मेरा 8-9 किलो का वजन घट गया। ठीक है, बट वो दिन अलग थे। आजकल तो गाड़ी भी जा सकते हैं मेरे ख्याल में काफी हद तक, राइट? ओके, मोटे मोटे तौर पर ये जो सुमद्रोंग चू है, ये किंजमाने और बुमला के बीच में है, ठीक? तो अभी हम आई टेक देम देयर, देन यू एक्सप्लेन, राइट? ये आप देखिए, बुमला के बगल में लेफ्ट किंजमाने है, और बीच में एक मैंने लिखा है वांगडुंग। ओके, वांगडुंग आई कम और भी थोड़ा नजदीक आपको दिखाऊंगा। नॉर्थ टू साउथ एक नाला आता है, उसका नाम है न्यामजांगचू। ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एक नाला आता है, उसका नाम है नामकाचू। ये नामकाचू और न्यामजांगचू आके किंजमाने में मिलते हैं। ये थोड़ा मैंने नाम वगैरह थोड़ा हटके लिखा है, इट डजंट एग्जैक्टली कंफर्म टू द एलएसी, बट आपको समझ के लिए। और ये किंजमाने जो है एक इंपॉर्टेंट पास है, और जो नीचे है, और इसी किंजमाने पास के थ्रू दलाई लामा आए थे 1959 में, ठीक है? यहां से जब आए थे, इसी के जरिए आए थे तवांग के अंदर। और ये इलाका देखिए, ये आप यू कैन सी द रिलीफ। वांगडुंग कहाँ है, नामजांगचू वहां से कैसे आता है, नामकाचू बाएं से आता है। ये जो हतुंगला लिखा है वो हमारे पास है, जो तागला है वो नामकाचू के ऊपर, वो उनके पास है, ठीक? और ये वांगडुंग जो है वो अभी, आई विल हैंड ओवर टू यू जनरल कुलकर्णी, प्लीज गो अहेड। Now, like what Jan Shankar was trying to explain, this entire area, one point which should bring us back to 1962 is the McMahon line, which according to us runs along the Thagla Ridge, because it's the watershed principle, internationally accepted watershed principle. So it runs along the McMahon line, which runs along the Thagla Ridge. But the 1962 war जो हुआ, थागला रिज से नीचे सदर्न साइड हमारी तरफ जब पीएलए की फौज आई और वहां से जो लड़ाई शुरू हुई, well, that is known to everybody what happened at Jimitang, what happened at Tabang, what happened at Bumla. तो ये जो लड़ाई है वो उसके बारे में नहीं बात करेंगे. We will now go back to what exactly happened in 1987 in the area which is referred to as Wangdung or Sumdorong Chu. 1980s में बातचीत शुरू हुई चीन के साथ कि हमने अब ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसके ऊपर थोड़ा बातचीत होनी चाहिए. उसके लिए 1962 में लड़ाई हुई. 1980 में अब लगा कि अब बातचीत होनी चाहिए. 84 के आसपास अगर हम देखें, जब तक बातें हो रही हैं, एक ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हो रहा है, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है उसी साल के अंदर, और हमने देखा कि चाइना में भी काफी परेशानी हो रही है. Deng Xiaoping has taken over. He wants to modernize China. So China is just in this initial stages of modernization. तो ये सब के मद्देनजर देखते हुए 84 के आसपास और जब बातचीत शुरू हो गई, हमारे जो ग्लेशियर्स होते थे वो इलाका वांगडुंग में जिमीथांग से अपने याक्स को ले जाकर के चराते थे और वापस आते. सिर्फ चराने वाली बात. अब ये इलाका कहाँ पर है? दिस इज साउथ ऑफ थागला रिज एंड नॉर्थ ऑफ अस एरिया. हम लोग जिमीथांग में होते थे, जैसे जनशंकर ने बताया किंजमाने. किंजमाने वही जगह है जैसे उन्होंने कहा कि दलाई लामा भी यहीं से अंदर भारत के अंदर आए तिब्बत से. तो ये जो इलाका है न्यामजांगचू और नामकाचू, जहाँ पे दोनों नदियां जो है वो मिलती हैं. अब जब इस तरीके से हम 84 में भी गए, 85 में भी गए, ग्लेशियर्स चलते थे. एसएसबी के नीचे आईबी की एक छोटी सी पार्टी जाती थी विंटर्स में, वहां पे अपने जो उन्होंने थोड़े से हट बना रखे थे उनको बंद कर देते और वापस आ जाते. 86 में पीएलए ट्रूप्स आकर के बैठ गए. तब पता चला कि ये क्या ऐसे कैसे हो गया कि पीएलए ट्रूप्स अचानक जिस जगह में हमारे ग्लेशियर्स आते थे वहां पे आके बैठ गए. 12 असम होती थी और 12 असम नई
पलटन खड़ी हुई और उनके सीओ होते थे कर्नल अंताल, वो अब नहीं रहे, वो ब्रिगेडियर अंताल बल्कि गुजर गए। वो पलटन जो थी 12 असम, उनको वहां पे उस इलाके में थे। जनरल जेम्स सिंह वो डिव कमांडर थे और उन्होंने सोचा कि अब अगर इस तरह की हरकत हुई है तो हमने कुछ करना पड़ेगा। जनरल सुंदर जी जो थे चीफ होने के नाते, उन्होंने कहा कि हमने चीन को सबक सिखाना चाहिए कि इस तरह वी शुड नॉट टेक इट लाइंग डाउन एंड वी शुड इंश्योर एंड एक्सर्ट आवर राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, कि वो अपना इलाका है, एंड दैट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैकमोहन लाइन इज नॉट बीइंग डन प्रॉपर्ली। लेकिन अगर चंद किताबें जो लिखी हैं तब के जो होम सेक्रेटरी थे और बाद में वो गवर्नर बने अरुणाचल के, मिस्टर प्रधान, तो वो कहते हैं कि मैकमोहन लाइन जो है जिस तरीके से एक मोटे पिन से बनाई गई, तो शायद चीन ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि जब वो क्वार्टर इंच का था और अब अपने पास आले अच्छे हैं, अब हम यकीनन कह सकते हैं कि मैकमोहन लाइन कहाँ से जाती है। No, let's not go into the technicalities of the backbone line, but the fact remains ये आए कैसे। अब जब चीन उधर आ गया, धीरे धीरे करके उन्होंने अपना, पहले 40 आदमी आए, बाद में बातचीत हुई, तकरीबन 100 के आसपास आदमी हो गए, अब थोड़ी सी मुश्किल हुई। राजीव गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव भी दिया चीन को कि आप पीछे हट जाए, हम उस इलाके में पेट्रोलिंग नहीं करेंगे, आप पीछे हट जाए। पर चीन नहीं माना। अब चीन नहीं माना तो अब क्या कर सकते थे। अब ये बात 1986 की हो रही कि चीन नहीं मान रहा है, और उसके तुरंत बाद आईपीकेएफ हुआ, और आईपीकेएफ में भी हमारे लोग इन्वॉल्व थे। ब्रास्टैक हुआ, उसमें भी हमारे लोग जबरदस्त 10-10 डिविजन इन्वॉल्व थे। अब ये एक इरिटेशन सा जो चीन ने खड़ा कर रखा था, उसके बावजूद जब इस तरह की कार्रवाई हो रही थी, सुंदर जी जो चीफ थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चीनियों को सबक सिखा के रखूंगा। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत 1962 का है और ये किसी तरीके से 67 में भी हमने उनको दिखाया, 60 अभी 87 में भी हम उनको अच्छी तरह दिखाएंगे नथुला के बाद कि क्या कर सकते हैं। राजीव गांधी वॉज ऑफ द व्यू कि अगर मसला जो है अगर डिप्लोमेटिकली हल हो सकता है तो इसको डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश करते हैं, बनिस्बत कि हम लोग एक कन्फ्रंटेशन पूरे मैं कहूंगा कि विश्व में एक तरीके से माहौल पैदा हो गया था कि शायद चाइना और इंडिया के बीच में लड़ाई हो सकती है, क्योंकि मोबिलाइज इंडियंस ने भी किया अपना ऑफ तालकन के द्वारा, जिस तरीके से जनरल सुंदर जी ने अपने ट्रुप मूव कराए। और जब जनरल जेम्स सिंह जो जीओसी थे, वो जब ब्रीफिंग कर रहे थे अपने जनरल सुंदर जी को कि आप ऐसा करेंगे, ये करेंगे, तो उन्होंने कहा कैसे करो। उन्होंने कहा मुझे तकरीबन 2-2.5 हजार खच्चर चाहिए और उन खच्चरों के द्वारा हम सामान ले जाकर के इनको लॉजिस्टिक। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, कौन से खच्चर की बात आप करते हो, अब तो हमारे पास हेलीकॉप्टर्स है, हम लोग सियाचिन में हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं लॉजिस्टिक के लिए, आप हेलीकॉप्टर्स की बात करो। तो देवर सरप्राइज। तो इस तरीके से जो सोच है वो जनरल सुंदर जी के आने के बाद वो सोच बदली हो गई, और उस सोच के कारण जिस प्रकार से हमने लॉजिस्टिकली जीवितांग और जिस तरीके से ट्रुप्स मूव किए अपने आप को, और धीरे धीरे करके जो हाइट्स है जिसके बारे में जन शंकर आपको बता रहे थे, दो हाइट्स ऑफ लुंगरोला वर ऑक्यूपाइड, एंड द एंटायर हाइट्स ऑफ लुंगरोला वंस इट इज ऑक्यूपाइड, देन द वे टू तवांग इज एब्सोल्युटली कट ऑफ। और लुंगरोला के बगल में है तगड़ा रो। पोस्ट तगड़ा रो इसलिए कहा जाता है आज के, बिकॉज 12 Assam is the one which took the initiative and deployed itself over there. तो तगड़ा रो हुआ, आशीष टॉप हुआ, there was a youngster officer then at that point of time, उसके नाम पे आशीष टॉप हुआ, जिमी टॉप हुआ, क्योंकि जीओसी को भी जीबी बोलते थे और सीओ को भी जीबी के नाम से बोलते थे, काइपो हुआ, लुंगरोला हुआ, ये सारे के सारे जो पोस्ट है ये। अब बड़ी बात ये कि इतना ऑक्यूपेशन के बाद जो चीन है वो इस बात को समझ गई कि भारत ने इतने जल्दी मोबिलाइज करके इतने सारे लेकर के आए, वो करने में नाकामयाब थे। The Chinese could not mobilize the way the Indians had mobilized, and there was a lot of heart burning जिसे बोलते हैं within China, and Deng Xiaoping also knew उस वक्त कि जो चाइनीज पीएलए है उनमें इतना दम नहीं है, क्योंकि वियतनाम में भी उन्होंने वो करके नहीं दिखलाया जो उनकी सोच थी। तो बिकॉज दैट कॉम्प्लिसेंसी एंड दैट लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म which had set into PLA, so Deng Xiaoping also allowed them कि देखो क्या करते हो। The Chinese were unable to do, and we did it, and we did it in such a fantastic fashion कि we are occupying all the heights,
मैं जैसे जयशंकर बता रहा, मैं वहाँ सीओ भी रहा लुंगरोला में, तो वो ऑल द हाइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय अस, इवन सब्सिक्वेंटली व्हेन देयर इज अ कमांडर द एंटायर दिस थिंग। और जो पोस्ट वांगडुंग है चाइना पीएलए का, वो बिल्कुल भी ओवरलुकिंग, सवाल ही नहीं पैदा होता। बट the Chinese also tried to prove a point that the McMahon line cannot be settled and will not be settled. Much that in 62 and a little before that, the exchange was there. A possible exchange of quid pro quo, we will settle with McMahon line and you can give us Aksai Chin. That talk was on. Subsequently also, Deng Xiaoping. However, Rajiv Gandhi was invited to Beijing and he had a one-to-one talk with Deng Xiaoping. Deng Xiaoping was quite impressed with the young prime minister of ours, and he accepted. He said, "We will see that the issue will be resolved between the two countries," and that was in '87. And you can well imagine it took us 9 years, and you can't say resolved. There was some portion. There were two posts that are just down below, which were moving from Lungrola towards Iswanglu. We said that we would not occupy them, and the Chinese also said they will not go. So till date, we follow that particular system of not wanting to go into each other's area, and therefore a resolution of sort in which not a single shot was fired, not one shot was fired, and the whole thing was settled. However, who was the army commander at that time? General Narari. He was also a professional man, an engineer man, who ensured that the mobilization took place in a manner it should. And the person who came to take over from the army commander was General J.K. Puri, एक गनर, जैसे जनरल शंकर गनर है, वैसे वो भी गनर ऑफिसर थे जनरल पुरी, प्रोफेशनल मैन who ensured that there will be nothing. So General Puri moved out, and General Sharma, who is the younger brother of Major Somnath Sharma, जो आर्मी कमांडर बने, जनरल वीएन शर्मा बोलते हैं, that army commander who later became the chief of the army staff, वो आर्मी कमांडर थे। और वो जब वापस कॉलेज ऑफ कॉम्बैट से आए और उन्होंने टेक ओवर किया। General Sundarji was quite this thing ki, in any case now it has to be resolved. So it is this issue which seems a little bit of a, मैं कहूँगा एक छोटी सी कहानी है इसमें कि किस प्रकार से राजीव गांधी खुद गए वहाँ पे, पर तवांग में लैंड नहीं कर सके, बड़ी उनको दिक्कत हुई जीवितांग में जाने के लिए। However, when he was being briefed और उनको बताया गया कि ये है, तो किस प्रकार से फिर उनको जवानों ने कहा नहीं नहीं हम सबक चीनियों को सिखा सकते हैं। General Sharma says that there were two questions that Rajiv Gandhi did sort of, wanted an answer to from now the chief was General V.N. Sharma. General Sundarji retired हुए, General V.N. Sharma took over from him, and Rajiv Gandhi was the prime minister. He was saying that the Chinese have inviting me over to Beijing. You think I should go, or will I be humiliated by the Chinese? So General V.N. told him, no, there's no question, because we are in a very, very strong position. आप जाइए और आपको देखेंगे, आप देखेंगे कि the Chinese will not do anything which will hurt you at all. Chinese, fortunately, मैं कहूँगा कि they did not take any step. Deng Xiaoping was in fact on the back foot. And अगर आप देखें from then on till date, अगर आप देखें, the Chinese learned कि किस प्रकार से वो 1987 में भारत ने किस प्रकार से मोबिलाइज किया और इफेक्टिव हुए। एक छोटे से कदम, जो गलत कदम जो चीन ने उठाया उसके ऊपर, और लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन चाइनीज जो है वो नहीं थे। The PLA was not prepared. The PLA was not logistically sustainable. The troops were far behind, and it would take them 2-3 seasons to come and be effective. They learned a lesson. They saw to it. They built up their infrastructure. They built up roads. They built up railways. They built up all kinds of camps and dual camps and dual villages. And now a state has come when the Chinese are fully prepared to take on within few hours from wherever they are. But in 1987, again, as I said, they repeat what Jal Shankar said, Galwan. Now, Galwan is a combination of all of it. And again, the Chinese also seem to feel that, yes, much that Xi Jinping might say, power blows from the barrel of the gun like Mao Zedong, he is hesitant to use it because जो retaliation होगा इंडिया की तरफ से वो इतना strong होगा कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज की तारीख में we are obviously occupying the entire thing, the Thangla Ridge since 1962, as from where we want the McMahon line to run.
which they claim it should be running through Sumdorong Chu and not the McMahon. Sumdorong Chu is now south of the perceived McMahon line of ours, which runs towards Bangladesh. तो ऐसे इसमें हम देखते हैं कि आज की तारीख पे we are very well placed over there. And the incident which has just happened, that happened at Yangtze. वो जो अभी हम लोगों ने देखा बीच में, how at Yangtze where the Chinese did try to dislodge the Indian troops and how the Indian troops retaliated so hard that the Chinese had to run back from Yangtze, and after that they did not. But मैं अपने आप को यही खत्म करने की कोशिश करूंगा कि we have to be vigilant. China will never, repeat, never want to settle the boundary dispute unless they get into a position of strength. And that position of strength, it takes time, modernization, and accepting and expecting to be able to fight it out, and then also to be able to get equally strong in the Indian Ocean region, how to have good partnerships with various countries, how to ensure that the Chinese do not do, how can China be made to realize that they are not just the Middle Kingdom, we are also part of it, and together we can grow. Hopefully, अगर चीन इस बात को समझता है कि इस तरह की कार्रवाई अगर चीन करेगा तो गलत है, then only the realization still doesn't seem to set into the Chinese mind. The Chinese mind still feel that Indians are not fully prepared and they are waiting for an opportunity to teach कि कैसे I wouldn't use the word teach India a lesson, but attempts are always there how to make sure that the Indians are made to feel small in South Asia, how they're made to feel small in Southeast Asia, and how in Asia, China alone must be the king of Asia and nobody else can see. Notwithstanding that, I think we have now reached a level of modernization, of our preparation, miles to go. I'll say we are not as yet, we have miles to go before we can actually take on China, because now in the comprehensive national park, definitely the Chinese learned a lesson from 87, went ahead. सुमदोरंग चू से उन्होंने सीखा कि हम लोग तो बहुत पीछे रह गए, भारत आगे चला गया, तो भारत ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी करनी चाहिए थी, चाइना ने किया. तो अपने लोकतंत्र की चंद एक बंदिशें हैं, लेकिन लोकतंत्र एक लोकतंत्र होता है, उसके अपना जज्बा होता है, एक अपना तरीका होता है. Not we will slowly and steadily move to an area where we can negotiate with China from a position of strength. The Chinese are not 10 feet tall. They are as vulnerable as one can be. Only thing is what General Sundarji at that point of said, that I can, I will. The government at that time said, no, we will resolve it diplomatically. I'm sure it did take a long time to resolve it diplomatically. But now, a strong will, a strong military, a strong economy will alone make China realize that they cannot mess around with India. Yes, Yeah, Shankar sir. right. Thanks a lot. आपने बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ बताया है. I'd like to clarify a few issues, which General Kulkarni has said, and in fact, I'll highlight them. There's no point or difference of view. If you see, I'll show you that map again so that you have an idea, right? Yeah. Yeah, I'll just show you that map so that you understand. This place, sorry. Yeah, if you see this map, you can see Tagla Ridge going down to this place called Kenzamania, that's the pass. And ऊपर उस side जो है ये सुंदरंग चून and ridge निकल जाता है. That's the place where the Chinese came and put up their thing. On the other side, the ridge keeps going up to the north. It gains height. All the heights in this area are with us. Complete set of heights in this area along the LAC are with us. Complete. Where Wangdung niche hai, we overlook Wangdung. And from there along Bumla, go right up to Tulungla, all the heights are with us. And that is what has surprised China always. In fact, we have actually, they made the mistake of grabbing Wangdung, but we grabbed the entire LAC heights. That is why they keep trying to keep coming into Yangtze, and they can't come. And they can't make any inroads in this sector. Though they occupy the Tagla Ridge, even if they have to come to our side, they have to come down Tagla Ridge, go into the Namkachu, and then come up to this Hatulungla Ridge. There's a ridge. It will be Khada Ridge.
So there is no question of any. That is why you will see in this entire area, there is no encroachment, there is no chit pit, nothing. All encroachment, all chit pits happens in Eastern Ladakh. यहाँ try करते रहते हैं, कुछ होता नहीं है. Second, in this 87, Indian Army learned how to mobilize in mountains. We had never mobilized the way we mobilized in 87. And this has served us in good stead from then to now. Because when the Chinese did the small intrusion into Wangdong, we mobilized 2 divisions into this area. We had never had the capability to maintain 2 divisions in this area. As General Kulkarni said, at that time, General Sundarji used helicopters and air assets to mobilize everyone there. Of course, mules and all were used, but we went there. The Chinese didn't know what hit them. From then to now, this ability has stood us. The third thing is we learned how to fight big battles in mountains. Before this, the last effect which we had was only in 62. And 62, we really didn't fight in this area. But in this 87, we learned how to defend this area. And that defense has never faltered from then to now. Okay, if you see, there is nowhere in the East that the Chinese have made any funny moments which we have not countered well in hand. Neither here nor in Sikkim. One more point which is very important in this area is when we had this problem in Wangdong niche tha. It was in a funny place. You'll be surprised. We could not fire artillery there. We took up guns, we took up Bofors, everything. Bofors tab उन दिनों में 87 की बात है, 84 में आया था. We took up Bofors there, and Bofors could not engage Wangdong. The other guns we had also could not engage Wangdong. You will be surprised. We had to get the Bofors 20 kilometers back to a place called Kaila, and Kaila is on the edge of Sela, which is far behind. It is only from there that we could engage Wangdong. वो खड्डे में था, right? And also these areas which are to the right, like Tulungla and all, were out of our artillery reach. And we learned this area with new guns and new gun systems and long-range weapon systems, how to defend this area with fire. A major point which I want to tell everyone is this, that on the enemy side, on the Chinese side, Bumla ke north, the area is absolutely like a tabletop. When you say that the Chinese are better prepared, they can come up very easily, it is because of the fact that us side mein zameen samtal hai, roads are, and the whole place is approachable. But that is the only half of the story. On our side, it is difficult. We have done the difficult part. If tomorrow we have to go across, it is the easier part. And for them, if they have to come across, it is the tougher part. So it is not easy for them to come and capture an area and do what they want. In fact, the toughest part of their offensive will start if they capture first they have to capture the ridge line, which is at 18,000 feet. It is not feasible. And uske baad, they have to come into an area which by nature it does not have infrastructure. On the other side, they have infrastructure. यहाँ हम मुश्किल से हम infrastructure बनाते हैं. And this is one of the reasons why our infrastructure lags behind theirs. ये समझने वाली बात है. ये बात ये नहीं है कि because we didn't have money, we couldn't develop infrastructure. It is also because of the terrain, right? So we are in a good balance out there. And what we have learned in 87 is valuable. Would you like to add anything before I take on questions? No, thanks a lot, Shankar sir. I think you have explained it so very well. And there's no denying the fact that the Chinese can be taken and they are very much vulnerable. And once we are determined, the artillery has played excellent role. And that role of artillery is something which we must, see to it. Of course, now there's a whole lot of rocket and everything which the Chinese have tried to get to themselves. But notwithstanding that, our artillery has played a fantastic role. It played as just new or old, whatever you might call it, in Kargil. And that is which we must be proud of. And now we have ability, capability,
to take on Chinese, but yes, a lot still needs to be done. We will do and will continue. Yeah. See, in high altitude, there are और इन्फेंट्री एंड आर्टिलरी, अगर हमारा पास ये दोनों चीज है तो विल विन द डे। और चाइना एक और चीज है, इस इलाके में चाइना के पास कितना भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर ना हो, वो लाके यहाँ हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकते। उस इलाके में उतना ही वो ताकत लेके आ सकते हैं जो हमारे पास है। एंड एक्चुअली टुडे वी आर इन अ पोजीशन ऑफ स्टेलमेट इफ देयर अ फाइट कम्स, राइट? Don't ever think that China is superior to us on the LAC. Okay, I must admit that in the period from say about 2015, 16, 17 till 2020, our nation was a little underconfident because China had gone ahead economically, and they started talking of this comprehensive national power which can win the day. But after 2020, we have regained the strategic confidence of ours. गलवान में जो उनको मात दिया है, उसके बाद we have regained our strategic confidence. Now I have no doubt in my mind, it doesn't matter what their economy is, on ground we will be better off, right? And I don't think there's any thing on it. Okay, first and foremost, I would like to thank Tibetan Monk for this super sticker, and then I would like to thank BVR for this thing. So kind of you. Then I'll come to a few questions. I'll come to the questions of Eshan later. Let me handle a few questions more. Yeah. Anand wants a little more English because he doesn't know Hindi. I hope today we have spoken enough of English. Right. Okay. Right. BBR says, my first question, why don't we take the fight to the enemy and on enemy soil? This may sound juvenile, but we don't adopt tactics. Don't we adopt tactics like the enemy salami slicing and feigning innocence? Yeah, I think you should answer this. We can take on Chinese in any way. There is no denying the fact. The only thing is, since the boundaries are not drawn, that is the only problem. And the LAC is virtually whatever the Chinese want is what the LAC is. We've been wanting to negotiate with China that they must come on the table and draw this thing. But they have always shied away from it. The only time they did was to settle the middle sector, in which they showed the map and the exchange. The map was not even for 5 or 10 minutes. That's all. The exchange of maps is also not there. And therefore, China will continue to do what it is doing. We have to be more vigilant. And the Chinese are aware that it is not easy now to take on the Indians. But we should not get complicit. We should be fully prepared. The preparation is the best form of defense. There is just no problem. If you are vigilant, you can take on anybody, anytime, wherever it is. The Chinese are finding a way that they would want to. But then I don't think the Chinese will ever succeed. Then our national aim has always been that we are not the first ones to start. We don't start. And if the Chinese intend to start, then we give it back very badly. Yeah. Look, if the Chinese start, we'll finish it. Yeah. Okay. On that, let's not be very clear. See, it's easy to start a war. Like, I'll take your mind back to what Mr. Vajpayee, our Prime Minister, said. He said, भाई लड़ाई में तो हम चले जाएंगे, इसको खत्म कैसे करोगे? Exit policy for a war is important. अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान ने जितना भी लड़ाई हमारे साथ किया, पहले तो हमारे ऊपर हावी हुए थे, बट बाद में मात खाना पड़ा because they don't have an exit policy. Similarly, in China started this problem in Galwan. They don't have an exit policy. They are stuck. The pressure is on them. Why the pressure is on them, I will not discuss today. But tomorrow I am going to talk about it. Tomorrow evening my talk is on how to strategize the LAC. You ask me, then I'll answer that. Okay. So don't worry about it. Okay. The next question from Eshan. Sir, why are we not able to reverse the propaganda and keep reminding the Chinese about events like Galwan where we thrash them? Are we deliberately taking the silent approach in this department? Yep. No, definitely not. The Chinese believe in the propaganda. You found even in 1967, after how many years, they said that they had lost only about 38 people.
and that's all. When we know, imagine the army commander, the corps commander, the divisional commander are there to hand over the bodies of the Chinese, and not for one or two bodies that or 38 bodies they'll be there. There were 300 of the PLA troops dead that they exchanged, and it carried on for 2 consecutive days, the 15th and the 16th of September 1967. So you can imagine the kind of bodies that were lying there of the Chinese which had to be handed over to China. The Chinese have their own way, but yes, there are certain times because we are a democracy, we have a rule of law, we can't take and we have to ensure that nothing, we can't behave in a manner which the Chinese behave. They're an autocratic nation, they're a communist nation, they have a single party system, and the PLA also is part of the party. It's the People Liberation Army, it's not a Chinese army. We might be saying so, but the people is the party's army. Unlike us, it's a different this thing. So I don't think we would have wanted to do much that we would desire, but that is not the way to go. And I agree with Shankar that to start a war is not a problem. Exit is a difficult proposition. Yeah. Right. When nations go to war, people suffer, people die. It's not easy to see people dying. Okay. It's very nice to say fight a war. Okay. War armies are meant to maintain peace and bring peace to a nation, not to go and fight wars. What PLA is doing, they'll buy it. And they'll buy it, and आप कल सवेरे देखिए, I am putting out another video on their economy. Because of the fact that Chinese hide things, because of the fact they lie, because of everything, their economy is tanking. Similarly, because of the fact they have lied in Galwan also. They have suffered much more casualties, but they have lied. They They had have lied 48 dead. yeah. They have lied about their casualties in Vietnam. They have lied up even today. It is recorded that they have not published the casualties they have had in Vietnam, and in Vietnam they have had more than 25-30,000 casualties. In Sikkim, in 67, they had more than 400 casualties. They declared 36 casualties. Okay, so please understand, you're talking with a nation which is absolutely a liar. You cannot trust, and they only believe in propaganda. And we are absolutely the opposite side of that. So let's not behave like the Chinese. Okay, right. The next question is, sir, am I the only one who has noticed that videos targeting Pakistan made by TV personalities like Major Gauriya Arya get a whole lot more attention, even if they're just trash talk, versus good constructive videos on China? I think so. ये मेरा रोना है आप सब लोगों के साथ. भाई हमारा जो अगला एडवर्सरी है वो है चाइना. मैं इसीलिए मेरा जो जितना इस चैनल के अंदर आई गेट वेरियस पीपल who know the LAC, who know Chinese, who know the Chinese people, who have seen the Chinese army at close quarters, because that is our major problem. Pakistan is a phenomenon which is gone. ये कभी हमारा साथ लड़ाई नहीं कर सकता. पाकिस्तान रहे ना रहे हमें पता नहीं. अगर उन्हीं के पीछे पड़े रहोगे तो गौरव आर्या कैन प्लीज टेक देम ऑन. आई हैव नो प्रॉब्लम. आप भी देख लो. बट यहाँ आपको अगर चाइना के बारे में जानकारी होना चाहिए, इंडिया के बारे में किस तरीके से इंडिया हैज टू डिफीट चाइना और होल्ड ऑफ चाइना, आप इधर आइए. You would like to add anything, Sanjay? No, perfect. I think there can be nothing more than what you have said. Your channel is absolutely China specific with so much of information. अगर आप चाहे Chinese political activities हो, चाहे वहाँ के how the ladies are wanting to be, how empowered they are, China क्या कर सकता है, कितना पीछे जा रहा है, उसका production, economic activity, military activity, सबके ऊपर. I think the way you are going about, Shankar sir, hats off to you. Very well done. Very well done. Thank you. Thanks a lot. And people like General KULKARNi, who have all the experience. He has been in Leh and Ladakh as a chief of staff. He has been in chief of staff of Eastern Command. He has been a brigade commander in this area. He is commanded in Sikkim. He knows the area backwards. Okay, I have been in Eastern Ladakh. I have been exactly at all those places which we spoke of in Ladai. I have been in the central sector in Himachal, along the, sorry, not Himachal, Lipu Lake Pass,
axis में. I have been in Sikkim as a commanding officer. I have gone to Bhutan. I've seen the other side of Natula from a place called Tremola. Very few people in India have seen that place, and I went there walking some eons back. I have been to this Bumla, this Tulungla, and we are probably some of the few people who have seen all these places. And this knowledge, if you don't tap from us, फिर तो इंडिया इज द लूजर ना. और यही मेरा कोशिश है कि हमारा जितना एक्सपीरियंस है आप सब लोगों को दें. और यही नहीं, हमें ये मणिपुर के बारे में जानते हैं हम, ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में तो एवरी इंडियन इज एक्सपर्ट ऑन पाकिस्तान. और वो रहा क्या वहां, कुछ है ही नहीं. ओके, this is a comment I'm not going to take. No point talking about past glories. Why the Chinese were not pushed out of Ladakh in 2020 intrusions. The answer comes from Tibetan monk. Mr. Bean, please educate yourself about Ladakh intrusion first and then comment. I agree with you. Because, you should know what has happened. Because many people come and ask, ye nahi hua, wo nahi hua, wo nahi hua. Well, I would like to say that many things which people come and comment on my channel, I've already done in some other video. आप जब तक आप हमारे वीडियो नहीं देखते हो कैसे पता चलेगा? I do keep telling them, please see that video and all that. Yeah. Okay, Vishwanathan says, what would be the format of future conflict along LAC given that China is modernizing with technologies requiring lesser human intervention physically? How effective would these be against our deployment? The short answer, Vishwanathan, is I don't see a war happening. ये चुटपुट होगा यांगजी टाइप और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, because China doesn't have the capability to undertake a thing. They have learned their lesson in 2020. They are barely holding on to Demchok and Depsang. वो दिन दूर नहीं है when they have to vacate Demchok and Depsang. Yeah, your view, Sanjay. Yeah. See, we are all holding position in nice strength. There is no question. But yes, there are mountains there, and you don't have a fencing. It's absolutely a porous border. The LAC is perceptual difference which exists between the two countries. But notwithstanding that, after Galwan and after the so many rounds of talks that have taken place, China has understood that yes, it is not easy to mess up with India, and the Indians are vigilant, and that they will give it back irrespective of what be it. And Galwan was the right thing that could have ever happened, because the Chinese learned their lesson, and that much that they were premeditated, they knew how to go about it. Indians gave it back in even fist fights and pushed them hard and ensured that they could not take any Indian soldier for granted. Yeah, not only that, I would like to add, आज ये अभी चल रहा है हमारा वो वीडियो थोड़ा वायरल सा हो गया. There is one thing, India, China and the global power matrix, which I have done with General Vinod Bhatia और जो हमारे DGM होते हैं. अब उसको देखिए आप. आज के दिन चाइना इज वरीड अबाउट इंडिया, और ये कल का वीडियो मेरा शाम को यही है. और ये पिछले 2 वीडियो पीक इनटू एवरीडे चाइना में यही मैंने बताया कि भाई दे आर सो वरीड अबाउट इंडिया. लड़ना तो बहुत दूर की बात है, लड़ना इफ दे फाइट विद अस महंगा पड़ेगा उनके लिए. इट माइट बी द लास्ट वॉर विच शी जिनपिंग हैज स्टार्टेड. वी विल फिनिश इट. ओके. How good is our surveillance deep inside the Chinese territory, especially the satellites, because that's cheap and 100% indigenous? What is the progress on long-range MBRLs of 300, 400 kilometers? Look, we have adequate capability at this point of time to handle things. Don't worry. Okay? Right. Okay, I will take... Okay, Born Free. Sir, all your knowledge must reach us. Only till now, only 1%, I think. I agree with you completely. Unless more people come on this channel, I can also not expand people to come. Okay? Right. Yeah, all these years, China has kept our attention focused on north, whereas its main focus was in our seas. How can we shift our focus towards the seas and close the gap without losing the edge in the north? Please see this... we have put out a thing on the 4D strategy with China. 3 दिन पहले हमने ऑन इसको आउट किया था with General Vinod Bhatia. See that, Shanu, please see that. I think you were there that day.
4D strategy we spoke, and how to defend the maritime space. So there's no point talking about this. वो वीडियो पूरा हमने किया, 1 hour का वीडियो है how to defend the space. Okay, so don't worry about it. Yeah, I think we have finished most of it. Right. So this is what we had to say. Be confident. What we have won in 67, and what we have done in 87 are great. It is something fantastic. And follow it up with what we have done in 2020 in Eastern Ladakh. Please remember, we are the only army which has made PLA break its own bunkers and walk back 9 kilometers along the Pangong Tso Lake. No other army has done that. Okay? So that is what it is all. And today, fighting between two great powers like India and China is not fighting with this thing. It is more of deterrence, it is more of balancing, it is more of jostling, and it is more of a show of force. There will be no definite answer through thing. It's more of bargaining. Okay, so be cool-headed. Armies are meant to bring peace to a nation, not fight. Yeah. Anything else you have to say? Thank you very much. Always a pleasure. Fantastic questions, and very nice to interact with you. And the way you presented with so many maps and everything to be able to convey to your viewers as to what it is all about. I think very much. Thank you very much. I enjoyed myself in interacting with you as also your viewer. Thank you very much, sir. Yeah, Venkat says I'm extremely excited that a person like Lieutenant General Ravi Shankar has started his channel. He is definitely a no BS guy. Yeah, thanks a lot, Venkat. I am very glad that you have come. I've seen you after a long time, right? Okay, yeah. Uday Peri says, on a lighter note, maybe more videos of whipping Chinese will reduce some frustration. I like the cane whippings dished out last time. Yeah, at Yangtze we hammered them. Please remember, after Yangtze, एक incident भी नहीं हुआ है. Okay, and I at the end I would like to say, I would request you to tell all your friends to join in. 1. Number 2, join in as members, because like I said, I want to, anyone who comes on my channel, I should be able to give him some Guru Dakshina. ये जितने गुरु आ रहे हैं हमारे पास आपको सिखाने के लिए और सबके लिए, हमें कुछ तो देना पड़ेगा उनको, नहीं तो मैं थोड़ा शर्मिंदा होता हूँ. ठीक है, आई फील सैड. हमें कुछ नहीं चाहिए, बट माय गुरुस हु कम एंड टीच मी ऑल दिस एवरी डे, आई एम लर्निंग. I am a blessed guy that way. Thanks a lot. Right. Thanks a lot, Sanjay. It was a great having you. Thank you very much indeed. Grateful. God bless. Yeah. Jai Hind. Jai Hind. Thank you. Good evening.